Second year physics, chapter 19, and the topic is black body radiations. Energy distributions formula of black body radiations are laws of black body radiations. The radiations emitted from the black body obeys certain law, which is called the laws of black body radiations. These laws give us formula for the energy distribution, and the first theoretical attempt was made by Wiens. The first laws are called Wiens law. Wiens presented a theory and tried to explain the energy distribution of black body radiation on the basis of thermodynamic consideration and derived the formula. सबसे पहले वेन्स ने थ्योरी पेश की और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक और फार्मूला ऑब्टेन किया. द फार्मूला इज E lambda is equal to C1 lambda की पावर 5 exponential function e की पावर C2 divided by kT, where C1 and C2 are constant and E is the base of natural logarithm. The curve he obtained from this formula was fit with experimental curve for shorter wavelength and not fit for longer wavelength. विंस ने जो कर्व ऑब्टेन किया इस फार्मूले से, तो वो कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ फिट था शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए क्या फिट नहीं था, और जिसकी वजह से विंस लॉ क्या हो गया, फेल हो गया. द सेकंड थ्योरेटिकल अटेम्प्ट वाज मेड बाय Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans derived energy distributions formula considered that radiation inside the cavity back and forth from the walls of the cavity and form standing wave, just like standing wave produced in stretched string. After the failures of wind displacement law, Rayleigh-Jeans ने क्या डिराइव किया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस फार्मूला डिराइव किया, और उन्होंने कंसीडर किया कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या होते हैं, कैविटी के अंदर आगे पीछे मूव करते हैं और क्या बनाते हैं, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह स्टैंडिंग वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है. और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला को क्या किया, डिराइव किया कि ई लैम्डा energy of the wavelength of this radiation is equal to 8 pi kT divided by lambda की power 4. On the basis of this formula, he obtained a curve The curve he obtained on the basis of this formula was fit with the experimental curve for longer wavelength and not fit for shorter wavelength. इस फार्मूला के बेस के ऊपर उसने जो कर्व ऑब्टेन किया, तो वो कर्व क्या था, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए फिट था एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ, लेकिन फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ ये फिट नहीं था विद एक्सपेरिमेंटल कर्व, और जिसकी वजह से ये लाज भी क्या हो गया, फेल हो गया. आफ्टर द फेलर्स ऑफ वीन एंड Rayleigh-Jeans law in 1900, Planck introduced his quantum theory, which successfully explained the whole concept of black body radiation. Some assumptions of this theory is जब विंस और Rayleigh-Jeans लॉ फेल हो गया, तो इसके बाद प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी पेश की, और जिसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया the whole concept of black body radiations को. Some points and some assumption of quantum theory are: the atom of the wall of the cavity behave like tiny electromagnetic oscillator
These oscillators emit and absorb electromagnetic waves. वाल्स ऑफ द कैविटी के जो एटम है वो किस तरह बिहेव करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह और ये ऑसिलेटर रेडिएशंस को इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं द एनर्जी ऑफ एन आर सेकंड assumption of Planck quantum theory is the energy of an oscillator is En is equal to nhf where n is a quantum number, h is a Planck constant, and f is the frequency of radiations. Third assumptions of Planck's quantum theory: these oscillators do not radiate energy continuously. ये जो oscillator हैं तो ये continuously energy को radiate नहीं करते but only in a bundle, लेकिन bundle के form में radiate करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्वांटा जिसको हम क्वांटा कहते हैं और पैकेट्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी के पैकेट्स भी कहते हैं या इसको हम फोटॉन भी कहते हैं विच इज़ कॉल्ड फोटॉन द एनर्जी पैकेट इमिटेड ओनली व्हेन ऑसिलेटर चेंज फ्रॉम वन क्वांटाइज स्टेट टू अनदर क्वांटाइज स्टेट इन द सेम क्वांटाइज स्टेट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी ये एनर्जी पैकेट्स क्वांटा तब इमिट्स होते हैं जब एटम एक क्वांटाइज स्टेट से दूसरे क्वांटाइज स्टेट में जंप्स लगाता है या चेंज होता है सेम क्वांटाइज स्टेट में कोई एनर्जी ये रेडिएट कोई एनर्जी इमिट या रेडिएट नहीं करता है द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज En is equal to nhf and Planck obtained the following formula E lambda is equal to 8 pi divided by lambda की power 4 hf divided by exponential function e की power hf divided by kt minus 1. The curve he obtained on the basis of this formula was fit with experimental curve for shorter wavelength as well as for longer wavelength. इस फार्मूले के बेस के ऊपर उसने जो कर्व ऑब्टेन किया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए तो वो कर्व फिट था फॉर शॉर्टर वेवलेंथ एंड as well as for the longer wavelength with experimental curve and in 1918 Max Planck was awarded Nobel Prize for the introduction of quantum theory और 1918 में मैक्स प्लांक्स को नोबेल प्राइज से नवाजा गया किस वजह से फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ यानी क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम of the black body radiation is the wavelength and energy of this wavelength. This dotted curve represents the Wien's curve which is fit for the shorter wavelength. These dotted lines or curve represents the Rayleigh-Jeans law which is not fit for the shorter wavelength but fit for the longer wavelength. And this curve represents the experimental curve or the Planck's curve or the Planck's law which fits with experimental curve for the shorter wavelength as well as for the longer wavelength.